Hi all, can you see me? Can you hear me? Okay. So guys, welcome. I welcome you all to this session जिसके अंदर हम महाराष्ट्र डिस्कस करने वाले हैं. महाराष्ट्र is typically one of the toughest examinations as far as mathematics and SAT is concerned, right? So इस बार भी महाराष्ट्र का पेपर did not surprise us because as usual, as expected, questions थोड़े से लंबे थे, थोड़े से tricky थे, and again some of the questions involved a lot of calculations. So it is always a good choice as far as Maharashtra is concerned to be able to have that quality that ये question मुझे नहीं करना. राइट तो ये क्वेश्चन मुझे बाद में करना है. राइट सो लेट अस गेट स्टार्टेड गाइस, लेट अस गेट स्टार्टेड विद महाराष्ट्र पेपर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिकॉज आज के क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हैं. ठीक है, महाराष्ट्र में जो इस बार महाराष्ट्र का एग्जाम आया था, हमेशा यूजुअली महाराष्ट्र इज जो NTSE टिपिकली मैथ्स आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है. महाराष्ट्र का, हरियाणा का, मुझे ये दो पेपर्स बहुत अच्छे लगते हैं, चंडीगढ़ एज वेल, क्योंकि ये अच्छा टेस्ट करते हैं बच्चों को. बाकी पेपर्स तो तुमने देखे ही हैं, बाकी जो पेपर्स हमने डिस्कस किए हैं देवर most of the questions were drop the pen questions, right? All right, so let us get started guys. Let us get started with Maharashtra. So let us read this question guys. Arpita has some coins of 1 rupees and 2 rupees. The number of coins that she has is 50. So मान लेते हैं the total amount that she has is 75. Find the number of coins she has of 1 rupee and she has of 2 rupees. So again, अब इसको क्वेश्चन को जब मेरे सामने आया, I need not solve it. I need not solve it. बस यार ऐड कर लो और देखो कि 75 किससे बन रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, if I had to solve because the session is all about solving. So let's say 1 rupee वाले x हैं and 2 rupee वाले y हैं, दोनों मेथड से करके दिखाते हैं. And it is given that total number of coins is 50. So x plus y is 50. X plus y is 50 and total amount is 75 guys. Total amount is 75. So can I say x? And since there are y 2 rupee coins, so x plus 2y is 75. So we need to solve these two equations. If we subtract these, y will be 25 and x will be 25 as well. So x 25, y 25. So this is the correct answer. Otherwise, बहुत simple चीज था यार. अगर ये 1 rupee coin और ये 2 rupee coin है तो इससे total amount कितना आ जाएगा? 35 plus 30, which is not 75. इससे कितना आएगा? 15 plus 70. इससे कितना आता? 35 प्लस 40 एंड इससे कितना आ रहा है? 25 प्लस 50 विच इज 75 इन दिस केस. तो यहाँ से मुझे सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं था. आई नीड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बिना सॉल्व किए सिर्फ ऑप्शन से ही हो जाता था. एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न पर्टिकुलरली इन एग्जामिनेशन लाइक NTSE. वी नीड टू लर्न टू मेक यूज ऑफ ऑप्शंस. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. This is question number 2. One root of the quadratic equation is x square. Okay, क्या है? X square minus bx plus c is equal to 0 and x square minus cx plus c is equal to 0. So one root of the quadratic equation is equal. Okay. So one root of the quadratic equation is equal. Okay. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The ratio of the remaining roots is 3:4. If all the roots are positive integers, find the values of b and c respectively. Find the values of B and C respectively. आप बहुत मेहनत करते हो. Thank you guys. ठीक है, so this is for you all because we want कि इंडिया का वो academic level बहुत ऊंचा हो, बहुत ऊपर हो, because इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है. The only problem is awareness. People are not aware of these things and these are the kind of things which improve your confidence like anything, जो इंडिया को भी ऊपर लेकर जाता है. तो ठीक है, इसमें सबका फायदा है. तुम्हारा फायदा है, तुम्हारे पेरेंट्स का फायदा है, इंडिया का फायदा है. This is what we want, right? So let us do this question guys. तो क्या है? So x square minus bx plus 6 is equal to 0 and second equation is x square minus 6x plus c is equal to 0. ठीक है, so क्या बोल रहा है? One root is equal, so they have a common root. मतलब एक रूट इसका अल्फा है तो इसका रूट भी अल्फा होगा and the other roots are in the ratio 3:4. मतलब अगर इसका रूट 3 बीटा है तो इसका रूट 4 बीटा होगा. सो पहले इक्वेशन के रूट्स हो गए अल्फा एंड 3 बीटा, दूसरी इक्वेशन के रूट्स हो गए अल्फा एंड 4 बीटा. ऑल द रूट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स. फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी रिस्पेक्टिवली. सो बच्चों क्या दिखाई दे रहा है यहां से? अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखें फर्स्ट इक्वेशन से, 3 अल्फा बीटा का वैल्यू 6 हो जाएगा एंड यहां पर देखें तो 4 अल्फा बीटा का वैल्यू सी हो जाएगा. सो अल्फा बीटा का वैल्यू यहां से 2 आ गया तो सी का वैल्यू यहां से 8 आ गया, सी का वैल्यू यहां से 8 आ गया. तो अगर c का वैल्यू 8 आ गया बच्चों तो दूसरी इक्वेशन पूरी की पूरी पता लग गई.
सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और इसके तो रूट्स निकाल जा सकते हैं, इसके रूट्स हैं 2 और 4, 2 और 4। अब बस यही पता करना है कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है। तो इसके रूट्स हैं 2 और 4, एक रूट इसका अल्फा था, एक रूट 4 बीटा था। अब बच्चों 4 बीटा का वैल्यू 2 तो हो नहीं सकता, बिकॉज 4 बीटा अगर 2 है तो बीटा का वैल्यू हाफ हो गया, और बीटा का वैल्यू हाफ है तो 3 बीटा का वैल्यू 3/2 होगा। तो 3/2 तो इंटीजर नहीं है, बिकॉज दिया हुआ कि ऑल द रूट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब 4 बीटा हैज टू बी 4, मतलब बीटा हैज टू बी 1 एंड अल्फा हैज टू बी 2। So beta 1, alpha 2, the values of B and C are, the values of B and C respectively are, तो C का वैल्यू तो 8 आ गया। अच्छा, C का वैल्यू 8 आ गया तो फिर तो वैसे ही मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। C का वैल्यू अगर 8 आ गया बच्चों, आई नीड नॉट फाइंड, बिकॉज एक ही ऑप्शन है इसमें C का वैल्यू 8 है, विच इज ऑप्शन बी। अदरवाइज अगर मुझे फिर भी B निकालना है तो इसके रूट्स क्या हो गए बच्चों, अल्फा इज 2 एंड 3 बीटा विल बी 3, तो सम ऑफ द रूट्स विल बी 5 and 5 will be B. So B will be 5, C will be 8. So option B is the correct answer to this, right? Chaliye, I hope this is clear. Let us look at the third question, guys. Speed of the boat in still water is 6 kilometers per hour. The time required to go downstream is half the time required to go upstream. Find the speed of the water current. मान लेते हैं x है, मान लेते हैं x है speed of the water current। तो downstream speed क्या होगी, downstream speed क्या होगी, it will be 6 plus x, it will be 6 plus x, and upstream क्या होगी बच्चों, upstream speed will be 6 minus x, will be 6 minus x। so time required downstream कितना हो गया, downstream पे time कितना हो जाएगा बच्चों, d upon 6 plus x अगर d distance है, and upstream time कितना होगा, upstream time कितना होगा, d upon 6 minus x। अब क्या दिया हुआ है, अपस्ट्रीम का टाइम रिक्वायर्ड टू गो अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम इज हाफ, मतलब d अपॉन, एज पर द क्वेश्चन d अपॉन 6 प्लस x is half of d upon 6 minus x, and we are done। so 12 minus 2x is 6 plus x बच्चों, यहां से x कितना आ गया, 3x is 6, x is 2, so 2 किलोमीटर पर ऑप्शन है, बिल्कुल है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सुपर्ब ओम, सुपर्ब ओम। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। 155 to 157 in Maharashtra NTSE is a good score, because the question paper as far as mathematics is concerned was quite lengthy, quite difficult, guys. Right, so D is the correct answer to this one. I hope this is clear. Let us move ahead. The sum of the third and eighth term, बच्चों AP हमेशा से एक important topic रहा है हर NTSE examination के अंदर. So AP is something that you need to all practice a lot, right? Sum of third and eighth term of AP is 7. इसका मतलब T3 plus T8 is 7. Okay, what else is given to us? Sum of 7th and 14th term, तो T7 plus T14 is -3. Find the 10th term, मतलब मुझे find करना है A plus 9D. So that means I need to find A and D. So how do I find A and D? इन दो equations से दो equations बनेंगी. So T3 will be A plus 2D बच्चों, A plus 2D plus A plus 7D is 7. And T7 A plus 6D plus A plus 13D is -3. So पहली इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, 2A plus 9D is 7. 2A plus 19D is -3. So 10D का वैल्यू है -10 and D का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -1. D का वैल्यू कितना आ गया, -1. So D का वैल्यू जैसे ही -1 आया, put in any equation, let's say we'll put here. So 2A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 plus 7 is 16. A का वैल्यू आ गया 8, 8 आ गया, D -1 आ गया. So 8 minus 9 would be -1. Option A is the correct answer to this one, guys. Option A is the correct answer. Superb, superb Om, you're doing really great. You're doing really great. So again, guys, this shows the importance of arithmetic progression, right? Let us move ahead. Punjab will discuss next session, Praveen. Next to next session में discuss करेंगे. Let us go this. A bag contains 5 red balls and some blue balls. We don't know how many blue balls. Let's say X blue balls. आगे बढ़ते हैं.
A ball is taken out of the bag at random. बैग में से एक बॉल रैंडम उठा ली. The probability that ball taken out is blue. So probability of a blue ball. Probability of a blue ball होगा कितना बचे? Probability of a blue ball will be x upon x plus 5. And probability of a red ball. Probability of a red ball will be 5 upon x plus 5. And as per the question, guys, as per the question, the probability of a ball taken to be blue, मतलब PB is 2 times PR. Is 2 times PR. So that means x upon x plus 5 is 2 times 5 upon x plus 5. इसका मतलब x का वैल्यू बच्चों हो गया 10. x का वैल्यू हो गया 10. क्या क्वेश्चन है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. तो 10 plus 5 is 15. So A is the correct answer to this one. A is the correct answer to this one. This was again a very simple question. You should have done this question. जो लोग महाराष्ट्र से हैं, इन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना चाहिए था और ये ठीक होना चाहिए था. Let us move ahead. N is an odd number, then which of the following is true? N अगर odd है तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था. N अगर odd है, N को 1 मान लो या 3 मान लो. सो n को अगर 1 या 3 मानते हैं, अगर 1 मानते हैं, सो दिस क्लियरली इज नॉट ट्रू. n को अगर 1 मानते हैं, दिस इज ट्रू. n को अगर 3 मानते हैं, दिस इज अगेन ट्रू. n को अगर 1 मानते हैं, दिस इज ट्रू. n को 3 मानते हैं, दिस इज नॉट ट्रू. n को अगर 1 मानते हैं और 3 मानते हैं, नॉट ट्रू. दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर. अदरवाइज दिस कुड बी इजिली डन यूजिंग कॉन्ग्रुएंट. सो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो, वी नो दैट 2 is -1 mod 3. So 2 to the power n will be -1 to the power n mod 3. So this is the basic concept that we discussed in number theory in IOQM या pre-RMO preparations. If n is odd बच्चों, if n is odd, so 2 to the power n will be -1 mod 3. तो 1 add कर दो, so 2 to the power n plus 1 will be 0 mod 3. So this is the correct explanation. This is the correct explanation. 0 mod 3 मतलब is divisible by 3. So option B is correct. Option B is correct. Otherwise ये आराम से तुम n को 1 3 पुट करके आराम से निकाल सकते थे because n odd दिया हुआ था. इसमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं था. So B was the correct answer. Let us move ahead, guys. Let us move ahead. The first term of AP is 1. Again another question on AP, guys. Another question on AP. Let us see. The first term is 1. The common difference is 3. So common difference is 3. What else? The sum of n terms is 2380. मतलब Sn is 2380. What is the nth term? So Tn कितना होगा बच्चों? A plus n minus 1 into D. A plus n minus 1 into D. So A का वैल्यू दिया हुआ है, n minus 1 into 3 का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है. Sn कितना होगा? n by 2 2A plus n minus 1 into 3, and this is 2380. This is 2380. N is the only unknown. You will form a quadratic equation in n. You'll form a quadratic equation in n. उसको solve करना भाई तुम्हारा काम है. So n में एक quadratic बनेगी. थोड़े से coefficients बड़े होंगे because मुझे दिखाई दे रहा है कि n को जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, this will be a big number. This will be a big number और 2 कैंसिल भी नहीं हो रहा. 2 इससे कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल नहीं हो रहा. So this will be a quadratic जिसके कोएफिशिएंट्स बड़े होने वाले हैं. जिसके कोएफिशिएंट्स बड़े होने वाले हैं. You need to solve this quadratic equation, find the answer. इससे n आ गया, n आएगा तो हम यहाँ पर पुट करेंगे. तो this answer should be 3n minus 2. So n जो भी आएगा 3n minus 2 से आंसर निकाल लेंगे. जो भी आएगा, I don't know what the answer will be. सॉल्व करना तुम्हारा काम है. मैंने तुम्हें मेथड बता दिया. आई होप दिस इज क्लियर. सो अनदर क्वेश्चन ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गाइस. अनदर क्वेश्चन ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन एज फार एज NTSE is concerned, right? So let us move ahead. The probability that a leap year contains 53 Sundays. देख रहे हो बच्चों, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक एग्जाम के अंदर. ठीक है. दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस ईयर सीरीज. सो 53 संडेज. लीप ईयर इज 366. दिस इज 7 into 52 plus 2. अब ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे,
and Sunday, Monday. So these are the 7 possibilities. So अगर 53 संडेज है बच्चों, 52 डेज तो हर किसी को मिलेंगे ही मिलेंगे. अब 2 एक्स्ट्रा दिन संडेज की पॉसिबिलिटी यहां पर है. इन दोनों में से कुछ 1-2 दिन हो जाए तो मजा आ जाएगा और मेरा आंसर सही हो जाएगा. सो आंसर वुड बी 2/7, which is option C here. We have discussed this already, guys. We have discussed this already. This was again one of the papers. This was there in one of the papers. ठीक है? I think UP. I think you're right. UP के अंदर exactly same question है. तो देख लो, questions भी exactly same हो रहे हैं. And this is a textbook problem of probability, right? चलिए. All right, so we are given this distribution and we need to find the median. Guys, we'll be skipping this question and तुम्हें भी actually skip करना चाहिए था ये वाला question because this involves a lot of calculations. सबसे पहले मुझे xi निकालना है. xi कितना होगा इसका? 205, 215, 225, 235 and 245. This is xi. ठीक है? And then we need to apply that formula which involves n by 2 minus L upon f into h, L plus, right? So वो formula apply करना चाहिए. This would have taken a lot of time. This would have taken a lot of time. So it was very good idea to skip this type of question. अगर ये question last में time मिला तो अब करने वाला है, actual exam में करने वाला नहीं है. So we are skipping this question. Will not be using because इसमें direct formula है. Formula अगर तुम apply करोगे अपने आप आंसर निकल आएगा. So we are not using this. We are not doing this question over here. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. Ideally, I would have skipped. अगर मैं महाराष्ट्र से होता, I would have skipped this question, and that would be perfectly okay, right? So you need to know what questions to skip and what not to skip, right? Let us see. So a plus b is 2√3, ab is 3. Find the value of a4 plus b4. So a4 plus b4 के लिए बच्चों हम पहले निकालेंगे a square plus b square. So a square plus b square का वैल्यू क्या होगा बच्चों? a plus b whole square minus 2ab. a plus b whole square will be 12. Minus 2 into 3 will be 6. So a square plus b square का वैल्यू 6 आ गया. अब a4 plus b4 चाहिए, इनको दोबारा स्क्वायर कर दिया. So a square plus b square का वैल्यू 6 आ गया बच्चों, दोबारा स्क्वायर कर दिया. a square plus b square का होल स्क्वायर will be 36. So we have a4 plus b4 plus 2a square b square is 36 बच्चों, and that means a4 plus b4 will be 36 minus 2 times ab whole square. So ab whole square is 9 and this is 18. This is 18. So C is the correct answer. C is the correct answer and I can see Om has done this perfectly fine, right? So guys, superb. So this is a kind of question that we have done in identities. एक chapter मैंने already कर दिया है. Identities जो first lecture था इस foundation lecture का mathematics का, उसके अंदर इसी तरीके के questions हमने discuss किए थे, right? So let us go ahead guys, let us go ahead. All right, so question number 11, QR is parallel to NP. So these two are parallel to each other. Oh भाई, this is quite ठीक है, ये डराने वाली चीज है. 3.2 times QN, so that means QN upon QM is 32/53. So guys, if these two lines are parallel to each other, we can apply basic proportionality theorem. It is given that QR is 6.4 and let's say this is x. So we need to find x. So can I say 6.4 upon x, or x upon 6.4, we need to find x. So x ऊपर रखते हैं, x upon 6.4 will be equal to mn upon mq. So mq तो दिया हुआ है, ऊपर mn चाहिए. तो क्या करो बच्चों, 1 ऐड कर दो दोनों तरफ. Let us add 1 on both the sides. So if I take the LCM, qm plus qn will be mn. So mn upon qm will be 85/53. So this will be 85/53. So that means x will be 6.4 qm plus qn. यही है ना? Oh, I think I have written it wrongly. So बच्चों क्या है, qn upon qm is 53/32 actually. So adding 1 on both the sides, it will be 85/32. 85/32. ठीक है?
सो 85 अपॉन 32, तो 6.5 इंटू 85 अपॉन 32, ये कितना हुआ? सो 8.5 इंटू 2 शुड गिव मी 17. सो 17 वॉज द करेक्ट आंसर. अगेन थोड़ा सा डराने वाला क्वेश्चन था बिकॉज 3.2 और 5.3 इन्वॉल्व थे. ठीक है, बेसिक टर्म्स थोड़ी सी हल्की हल्की, इंटीजर्स नहीं दिया हुआ, पॉइंट डेसिमल्स में दिया हुआ, थोड़ा सा डर लगता है. बट अगेन इफ यू सॉल्व दिस, फंडामेंटल्स आर क्लियर, बीपीटी अगर पूरा का पूरा क्लियर है, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैनॉट स्किप, यू शुड नॉट स्किप. बिकॉज अगर मुश्किल पेपर है तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस को तो भाई फोड़ना है, इस तरह के इजी क्वेश्चंस को तो करना ही करना है. आई होप दिस इज क्लियर. यस, so let us move ahead guys. Question number 12, xy is equidistant from these 2 points. So xy is equidistant from these 2 points, the relation between x and y is, so simple distance formula. So xy pq is same as pr, so that is what we have to do. इनका स्क्वायर भी कर दो. So xy का डिस्टेंस q से क्या होगा? x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x minus 6 का होल स्क्वायर plus y plus 1 का whole square. So if you open this guys, x square and y square will get cancelled out. So we have x square plus 4 plus 4x plus y square plus 25 minus 10y is x square plus 36 minus 12y plus y square plus 1 plus 2y. So x square y square cancel हो गया, x square y square cancel हो गया. अब क्या बचा है हमारे पास? 4x बचा है, यहां पे 12x आएगा, तो 4x प्लस 12x is 16x. सो व्हाट इज लेफ्ट? माइनस 10y प्लस 2y, सो माइनस 12y. सो इट शुड बी ऑफ द फॉर्म 4x माइनस 3y. तो ऑप्शन ए ही होना चाहिए बच्चों, 4x माइनस 3y. बाकी चेक कर लेते हैं. सो दिस इज 12, 25 प्लस 9, 29 here and 37 there. 37 minus 29 will be 8. So 4x minus 3y का value 2 है, तो बच्चों A is the correct answer. So this was again a simple question which had to be attempted. You could not say no to this kind of question because अगर मुश्किल questions है बच्चों जो कि कुछ हो चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, उनमें इस तरह के questions को छोड़ने का scope बिल्कुल भी नहीं है. Right? Let us go ahead guys. Let us go ahead. All right, so this is one question which demanded a lot of analyzation. So from the information given below, find out which of the triangles, आधे बच्चों ने यहाँ पर गलती की होगी. Cannot be constructed. Choose the correct alternative. So पहला है क्या बच्चों? PQ is 6.2. If we look at option A, PQ is 6.2 and PR plus QR whole square is 81. So that means PR plus QR is 9. PR plus QR is 9. So बच्चों, this triangle cannot be constructed, though the triangle will get formed because sum of the two sides is greater than the third side. But exactly PR क्या है, QR क्या है? There can be infinite many triangles which can get formed. Because अगर PQ ये है, अगर PQ ये है और R एक ऐसा पॉइंट मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस यहां से प्लस उसका डिस्टेंस यहां से एग्जैक्टली सेम है, तो ऑब्वियसली वो बहुत सारे ट्रायंगल्स बना सकता है. इलिप्टिकल फॉर्म होगा, एलिप्स की फॉर्म में बहुत सारे ट्रायंगल्स बन सकता है. अदरवाइज भी वैसे ही पता है बिकॉज भाई साइड्स का सम पता है बट साइड्स नहीं पता. वी नो द सम ऑफ द साइड्स, अदर टू साइड्स, बिकॉज दिस इज 6 और 6.2, बट द अदर टू साइड्स एग्जैक्टली आर नॉट नोन. द सम इज नोन. So R is a point which is moving in such a way that RP plus RQ is 9. That means R can have infinitely many values. So there will be infinitely many triangles which can get formed. So यहाँ से एक triangle तो पक्का से नहीं बनेगा. So option A तो पक्का है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, right? तो AC AD, तो मतलब मुझे B चेक नहीं करना, और B वैसे भी अगर तुम चेक करो बहुत मुश्किल एनालाइज करना, तो B वैसे ही मुझे चेक नहीं करना है बिकॉज यहां से आ गया. बिकॉज ए तो सिंस नहीं है, ए पक्का से नहीं बन रहा, तो ए तो ऑप्शन में आना ही चाहिए. सो ए सिर्फ बी और सी में है, तो ए और डी और ए और सी चेक करना है. अगर हम सी चेक करें तो बच्चों यहां पर दिखाई दे रहा है दैट दिस ट्रायंगल कैन गेट फॉर्म बिकॉज सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स. दो स्मॉलर साइड्स का सम चेक करो, सम चेक करो. दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन 0.29 एंड तीनों साइड्स पता है, तो ट्रायंगल तो बॉस बनेगा ही बनेगा. मतलब सी तो पक्का से है,
मतलब C पे ट्राइंगल बनेगा, मतलब C इज नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो आंसर हैज टू बी दिस, आंसर हैज टू बी दिस। अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे बच्चों, यहाँ पे इन तीनों साइड्स निकालोगे तो सीट ऐसे आएंगी कि सम ऑफ टू साइड्स विल नॉट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो आंसर विल बी A and D। आई नीड नॉट चेक ऑल द ऑल्टरनेट्स, मैंने लॉजिकली डेवलप किया दैट आंसर हैज टू बी ओनली C एज पर द ऑप्शंस गिवन। आई होप you are clear about it. Yes? All right, so let us move ahead, guys. Let us move ahead. A storm broke the tree and the tree top rested 13√6 meters from the base of the tree. क्या मतलब है इसका? एक पेड़ था बच्चों, एक पेड़ था और वो ब्रेक हो गया, और वो ब्रेक हो गया, और जैसे ही ब्रेक हुआ तो वो गिर गया, जैसे ही ब्रेक हुआ तो वो गिर गया। तो ये बड़ा पेड़ था, स्टॉर्म आया और यहां से टूट गया और नीचे गिर गया। सो A, B, this is C and this will be C dash. So we know that BC is same as BC dash. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Making an angle of 45 degrees with the horizontal, मतलब this angle is 45 degrees। ये एंगल अगर 45 डिग्रीज है बच्चों, ये एंगल अगर 45 डिग्रीज है, that means tree rested 13 from the base. So this is 13√6. So this is 13√6. So that means this is also 13√6 as per the trigonometry. अगर ये 13√6 है, ये 13√6, this will be 13√6√2 by Pythagoras theorem. So AC, the height of the tree पूछा है. So AC will be AB plus BC dash. So बच्चों 13√6 plus 13√6√2. So if I take 13√6 common, it will be 1 plus √2. तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऐसा तो कहीं ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब I need to modify this. So यहाँ पे दिखाई दे रहा है यार ये दो टर्म्स तो नहीं हो सकती, क्योंकि दो टर्म्स तो इन्वॉल्व नहीं है। So अगर मैं 13√3 ले लूँ और √2 अंदर भेज दूँ, so it will be √2 plus 2. So ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन बिल्कुल है। So option is B. Option to this answer, the answer to this question is option B, 13√3 2 plus √2. I hope this is clear. ठीक है, तो ट्री आया, स्टॉर्म आया, ट्री ब्रेक कर गया, और ये लेंथ is 13√6. And since this angle is 45 degrees, this length would also be 13√6. और ये दोनों अगर right angle triangles form कर रहे हैं बच्चे, तो it will be 13√6√2, the Pythagoras theorem. So height of the tree will be this plus this. You need to add this and you need to check कि किस तरीके से आंसर आ रहा है, किस तरीके से आंसर आ रहा है। So answer B, option B was the correct answer to this one. Let us move ahead. Question number 15, guys. So एक triangle दिया हुआ है. It is given that QS is the bisector. QS is the angle bisector, and we know that angle bisector divides the opposite side in the same ratio as the length of the other two sides. So angle bisector, you need to know this property, guys. Angle bisector divides the opposite side in the same ratio as the length of the other two sides. That means this upon this. That means x upon 2x plus 5 by 3 is same as x minus 5 by 3 upon 2x plus 3 by 2 is same as, so this length upon this length will be same as this length upon this length. So everything is given in terms of x. We need to just simplify this and find the value of x. So if I cross multiply, it will be 2x square plus 3x by 2, 2x square minus 25 by 9. So this gets cancelled and x should be, did we do anything wrong here, guys? So 2x plus 5 by, x upon 2x plus 5 by 3 is x minus, oh, it should be 3 by 5 here. It should be 3 by 5 here. So 2x plus 5 by 3 and this should be 3 by 5. So if we cross multiply, 2x square plus 3x is same as 2x square minus 6x by 5 plus 5x by 3 minus 1. So this gets cancelled out. We can take x on one side and constant on the other side and we'll find the answer. You can check your answer. You can verify your answer. It should be one of these two options. I hope this is clear. Yes, MP is will be very soon, guys. Next, I think it should be Haryana, and MP will be covering MP in this week only. Don't worry.
Don't worry. So we're covering one state. We're trying to cover one state every day. So MP will be very soon, guys. So what is it? Is it B? I think it should be. I think it should be negative. I think it should be negative. The answer should be negative as per the calculation. So 3x plus 6x by 5 minus 5x by 3 is minus 1. So this seems to be positive to me. So answer should be negative, guys. Answer should be negative, right? So is it C or D? One of these two options should be there. You can check, you can verify. The concept was the angle bisector divides the opposite side in the same ratio as the length of the other two sides. I hope this is very clear, right? Chalo, आगे बढ़ते हैं. All right, so let us do this question, guys. In an isosceles triangle, the length of one of the sides of the congruent sides is 17. So this is 17, so this will be 17 as well. The length of the non-congruent side is 16. So this whole length is 16. Okay, what else? Find the distance between the vertex opposite to the non-congruent side, मतलब A, and the centroid. Centroid is G. ठीक है? अब बच्चों देखो, ये मुझे पता है कि if this is an isosceles triangle, the median will bisect because these two triangles will be congruent. The median bisects, the median will be perpendicular to BC. ठीक है? Because triangle ABD will be congruent to triangle ACD. Because two sides are same. This is the median, so this length is equal to this length, and AG is the common side. So these two triangles will be congruent in nature. Hence this angle will be equal to this angle. Hence this will be 90 degrees. ठीक है? अगर ये 90 है बच्चों तो ये 8 है, ये 17 है, 8 है तो this will be 15. So AD or length of the median would be 15, guys. Length of the median will be 15, and we know that centroid divides the median in the ratio 2:1. So it will be 2 by 3 times 15. मतलब 10. मतलब कि option A. I hope this is clear to you. Yes, this is clear to you. So AD is 15. So G divides AD in the ratio 2:1 internally. So AG part will be 10 centimeters, option A. Let us move ahead. Sin theta plus cos theta. Question on trigonometry, guys. Sin theta plus cos theta is 3/2. Find the value of sin theta cos theta. Very simple. Just square this. So if you square both the sides, so sin square plus cos square plus 2 sin cos is 9/4. This is 1 to 2. Sin cos will be 9/4 minus 1, which is 5/4. And sin cos will be 5/8, option C. So this was again a simple question, guys. So इतने मुश्किल questions के अंदर कुछ simple questions भी हैं. You need to identify those simple questions and do those simple questions right. Because इस तरह के question paper के अंदर सारे questions attempt करना शायद मुश्किल है. So you need to have a good idea of what are your strong areas, what are your weak areas, what is my strong area, but the question will be lengthy in nature. What is my weak area, but if given enough time, I can solve that. So you need to have a good analysis about what you know and what you do not know. And that is how that analysis will help you clear these kind of examinations, guys. Right? So the answer was 5/8. I hope this is clear. Let us move ahead. P is the center of two concentric circles having radius 3 and 5. So if I have to join, so this is 3 and this is 5. Pn is 5. And let me join PA as well. A point P. So two tangents are drawn from a point A outside the circle. Tangent AM touches the smaller circle at M and tangent AN touches the bigger circle at N. AM is 13. So AM is 13, guys. AM अगर 13 है, so मैं AP का वैल्यू निकाल सकता हूँ using Pythagoras theorem. So I can find the value of AP. So AP का square बच्चों, AP का square will be AM square plus PM square. AM square plus PM square, and we know both of these terms. AM is 13, so 169 plus 9. PM is 9. So this will be 178. So AP square is 178, and I can apply the Pythagoras theorem again in triangle APN. APN, I can apply Pythagoras again. So we have AP square is PN square plus AN square, and that is how we'll find the value of AN which is being asked. So AN square
will be AP square बच्चों minus PN square. So AP square is 178. This is what we have found already, and PN square is 25. So it will be 153, and this will be A. AN will be root of 153, guys. AN will be root of 153, which is option A. Again, we had to apply Pythagoras here 2 times. 2 times Pythagoras was, again, this was, you can say a medium question, a medium level question. You need to know that you have to apply Pythagoras theorem in these kind of questions. So medium level question, and you had to, you could do this right. Let us see, guys, again, a very good question. This is a superb question which was asked. So what is given to us? This is a triangle. This is a triangle. BC is 7. So what lengths are given to us? So BC is 7. AM is 8 root 3. So 8M. AM is 8 root 3. What else? AC. So AC is 14 root 3, guys. 14 root 3. So what is BN? So let's say BN is X. Let's say BN is X. So from this triangle, from the bigger triangle, I can use Pythagoras and find the value of MC. So MC square will be AC square minus AM square, guys. So it will be 14 root 3 whole square minus 8 root 3 whole square. 8 root 3 whole square. So you can find this value. You can find this value. If we simplify this, what does it come out to be? It will be 14 plus 8, which is 22 root 3. Into 14 minus 8, which is 6 root 3. So it will be 132 into 3, and this comes out to be 396. So MC is known to us. MC is 396, or root of 396. So MC will be root of 396, guys. So that means MB will be root of 396 minus 7. MB will be root of 396 minus 7. We need to find X, guys. We need to find X. So how do we find X? Can I divide this into 3 areas? Can I divide this into 3 areas? So area of triangle AMB. Area of triangle AMB plus area of triangle ABC. Plus area of triangle ABC. Can I say this is area of triangle AMC? Can I say this is area of triangle AMC? Area of triangle AMC. So we know both of these areas. So AMB will be half base height. So it will be half into base. Base is root of 396 minus 7 into height is 8 root 3. Plus area of triangle ABC, बच्चों क्या होगा? ABC will be base ये है and height ये है. Base ये है, height ये है, और otherwise ABC में base ये और height ये भी बोल सकते हैं, because we need to find the value of X. So it will be half into 14 root 3 into X is equal to area of the bigger triangle, and bigger triangle का area तो आराम से निकाल सकते हैं. It will be half into height is 8 root 3 into base is root of 396. So only unknown is X. The only unknown here is X. We can also use trigonometry. Yes, we can also use trigonometry. इसको थीटा मान लो, and you can chase the angles and find the value of X using trigonometry. This can also be done, guys. This can also be done, right? यहाँ पे trigonometry भी apply कर सकते थे, because अगर ये angle थीटा है, तो यहाँ पर X और 7 में relation आएगा. ये यहाँ पे X और 7 में relation आएगा. X और 7 में relation क्या आया? Sin theta is X upon 7. Sin theta is X upon 7, and from the bigger triangle we can find the value of sin theta also. From the bigger triangle, sin theta can be taken as 8 root 3 upon 14 root 3 upon 14 root 3. So directly compare. So X upon 7, बच्चों, X upon 7 will be 8 upon 14. So यहाँ से डायरेक्टली आंसर 4 आ गया, यहाँ से आंसर डायरेक्टली 4 आ गया, और इसको भी सॉल्व करके तो 4 आ गया. सो वी कुड डायरेक्टली अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू गाइस. ऑलरेडी किसी ने बोल दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दो, बट मैं ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें सेकंड ऑप्शन की तरह दिखाना चाहता था हाउ ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स इज, राइट. सो यूजिंग अ सिंपल कॉन्सेप्ट हाउ ब्यूटीफुल दिस इज बिकम. तो मुझे कहीं भी पाइथागोरस सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे मैंने पहले मेथड से किया था. So red and blue is the first method, green is the second method. So if this angle is theta, guys,
If this angle is theta and this is a right angle triangle, sin theta will be x upon 7. And in the bigger triangle, sin theta will be this length upon this length. Perpendicular upon hypotenuse will be 8 by 14. So just compare sin thetas in both the triangles, how beautiful things are, right? So इतने बड़े question को कितना छोटा कर दिया trigonometry में. This is the power of learning new concepts. This is the power of learning new concepts. Superb. Superb. So RPS Tomar, superb. This is what I wanted to tell you after doing this solution, but तुमने पहले ही trigonometry बोल दिया था, so I had to discuss trigonometry. Superb guys. I hope you've understood this guys. Trigonometry से ये एक लाइन का चुटकियों का आंसर हो गया, जो कि अदरवाइज कितना लंबा आंसर था. चलिए, last question of the Maharashtra paper. PQ is 7√3. So this is a square, so this will be 7√3 as well. We need to find the area of the shaded portion. So total area minus the area of the sector. So total area would be 7√3 whole square minus the area of the sector. So this is 1/4 the area of the circle. So 1 by 4 into 22 by 7 into r square. 7√3 into 7√3. So 7√3 whole square can be taken out and will be left with 1 minus 22 upon 28. So this you need to solve and find the answer. It will be one of these four. It will be one of these four. So again, this is the kind of question that you had to attempt, that you should have attempted. अगर मुश्किल question paper आया है, you should be having this ability to identify simple questions and mark those questions and do those questions there and then in the question paper guys. ठीक है, अगर कोई पेपर मुश्किल है, be very clear about one thing. अगर कोई क्वेश्चन पेपर मुश्किल है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सब लोगों के लिए मुश्किल है. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो कि मुझे कुछ नहीं आ रहा. इफ दैट पेपर इज डिफिकल्ट फॉर यू, दैट पेपर इज डिफिकल्ट फॉर ईच एंड एवरीवन हु इज गिविंग दैट एग्जामिनेशन, एंड यू शुड नॉट लूज होप. Hope is one thing, and hope is one of the best things in the world, guys. And hope never dies. So Maharashtra was definitely difficult this time. हमेशा ही होता है. तो कट ऑफ बच्चों, I think it should be around जो कि प्रीवियस कट ऑफ थी वैसे ही होनी चाहिए, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? हाउ टू गेट इनटू IITs we'll discuss in some other time, guys. I hope you enjoyed the session. I hope you liked the solutions. Take care. Till next time. Bye.